Good morning students, this is Priyanka Bansal from SKM Public School. Students, we have started chapter that theory base of accounting. In that we have completed assumptions of accounting. Okay, in that we have discussed about the going concern assumption, consistency assumption, accrual assumption. If you haven't seen the video, then see the previous video. Okay, all these points I have explained in previous video. These are the assumptions, okay, and these assumptions we have discussed under the chapter theory base of accounting. Okay, now today we will discuss the accounting principles. In today's class we will discuss accounting principles. So first principle is accounting entity. Okay, so what it says, an entity has a separate existence from its owner. According to this principle, business is treated as an entity, मतलब उसकी एक अलग से entity मानी जाती है which is separate and distinct from its owner. As if you know that I have told you this in the business studies also, that business and its owner has a separate legal identity in the eyes of law, except which case in sole proprietorship. ठीक है, sole proprietorship को छोड़ के in another forms and that the business and the businessman are having the separate legal identity. Okay, and as per this principle, that accounting entity says that the owner and the business has the separate identity which is separate and distinct from its owner. Therefore, transactions are recorded, analyzed, and financial statements are prepared from the business point of view, not of the owner. अब देखो क्या कह रहा है कि that in this what accounting entity क्या कह रहा है, ठीक है, that the business and the owner, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि separate existence होगी एक business की और इसके owner की, ठीक है. So all the transactions, जो भी transactions हो रही हैं, that all the transactions will be recorded, analyzed from the business point of view, मतलब business के point of view से record किए जाएंगे, not of the owner, because the transactions are done by the business. Okay, the transactions are done by the business, so all the transactions will be recorded from the business point of view, not of the owner. Okay, this is the first principle, that what it says, that there is a separate legal identity. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ऑनर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, व्हाट इट सेज दैट देयर इज ए सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस एंड द ऑनर. ओके, so the owner is treated as a creditor. Why the owner is treated as a creditor? Because you know that when we were discussing the accounting term, in that I have told you that the owner is investing. We can say that he is investing the money in the, or he is investing any asset in the business, that is known as कैपिटल. ठीक है, तो जो कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, दैट इज कंसीडर्ड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. एंड हु इन्वेस्ट द कैपिटल? ओनर. ओके, ओनर लगा रहा था, सो ओनर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर. इंटरनल लाइबिलिटी होगा, वो आउटसाइडर क्रेडिटर नहीं होगा. The owner is treated as a internal we can say creditor for his investment in the business. Why is considered as a creditor? Because he has invested the money in the business. Okay, as if the firm has borrowed from its owner instead of the outside parties. ये क्या है, अब देखो हमने फर्स्ट के अंदर यही डिस्कस कर रहे हैं, that the business and the owner is having the separate entity and business will operate from its own name. Okay, not of the owner. ठीक है, all the transactions will be recorded from the business point of view and the owner is treated as ए क्रेडिटर. व्हाट इज एज्यूम्ड, क्या एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस ने क्या है, अपने ओनर से अमाउंट बोरो की है किसी बाहर वाले पर्सन से करने के बजाय. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. ठीक है, अभी क्या है कि दैट द ओनर हैज इन्वेस्टेड द कैपिटल, ओनर ने क्या है अमाउंट इन्वेस्ट की है, दैट इज नोन एज कैपिटल. और उस कैपिटल के ऊपर क्या है, द इंटरेस्ट इज पेड बाय द बिजनेस एंड इट इज
the expense for the business like any other business expenses. His private expenses are treated as drawing, leading to reduction in capital. I have told you these all concepts are very important. If you haven't seen the basic accounting terms, if you haven't seen the videos, please see the videos, because drawings, capitals, expenses, all these terms I have explained in that chapter. Okay. Next is money measurement principle. This is, we can say that the feature also, in feature when we have discussed the features of accounting, in that also we have discussed that the accounting treats only in the financial transactions only. ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शंस दैट आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी कैन or can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounting of the enterprises. देखो वही बात होगी that the accounting records only those transactions which can be measured or which can be converted into the form of money. Non-monetary events like death of an employee, if there is any strike, dispute, or there is any that mismanagement, dishonesty by the manager, that is related to non-monetary events. ठीक है, there will be a loss to the business due to these non-monetary items, but these losses cannot be termed or we cannot express these losses in the form of money. That's why non-monetary events will not be included in the accounting. Okay, only the monetary transactions or the transactions which can be converted into the form of money will be recorded in the accounting. Okay, so what is the limitation of this principle? That it ignores qualitative aspect. We know that if a person is very efficient human, ठीक है, तो very efficient human is the asset. ठीक है, satisfied customers भी asset होंगे. Dishonest कोई people employee है या manager है, that is liability. मतलब देखो एक बंदा बहुत ज़्यादा efficient है, ये manager is very efficient, he is having the skills or managerial skills in a great way which makes the profits to the firm. ठीक है, जो बहुत सारे profits दे रहे हैं, but it is related to quality. It is not mentioned in the that accounting, because accounting records only the monetary transactions, so it is the limitation of this principle. Okay, value of money or currency is not stable. We know that the value of money is changing every day and that the currency value is not stable, and this is also the limitation of this method. To make accounting records simple, relevant, understandable and homogeneous, facts are expressed in common unit of measurement, that is मनी. अब ये एक कह सकते हैं कि वाई दिस मेथड इज चूज, बिकॉज टू मेक द सिंपल, रेलिवेंट एंड द अंडरस्टेबल डिसीजंस. ठीक है, first two were the limitations that it is ignoring the quality of the person and the value of the money is not stable. But why there is a standard that is used for money? Because the common unit is helpful in making the reliable data, and this data will help in making the comparative study also. Okay, because if there is a common unit, then only everyone can understood the concept how the accounts are maintained. Okay, if the common units are separate, they are if the accounts are not prepared by the common unit, it will make the variations in the accounting reports and the comparative study will not be possible. Next is accounting period principle. According to this principle, the whole indefinite life of an enterprise is divided into parts known as accounting period. We know that the accounting period is starting from the 1st April and it is ending on the 31st March. Okay, so what it says that the lifetime of the enterprise is divided into sub part, and that is known as accounting period, and accounting period is determined from 1st April to 31st
मार्च, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड को डिसाइड किया गया है। अकाउंटिंग पीरियड इज डिफाइंड एज एन इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। अब वाई द अकाउंटिंग पीरियड इज डिसाइडेड, सो दैट ए बिजनेसमैन कैन नो दैट वट इज द प्रॉफिट और द लॉस एट द एंड ऑफ द accounting period, and balance sheet shows the assets and liabilities of the particular time period. Okay, so accounting period is usually a period of 1 year, and that year may be financial year or calendar year. And usually which year is used? Financial year. Okay, calendar year is starting from the 1st Jan and the financial year is starting from the 1st April. So what is the relevance of this principle? This assumption requires showing the allocation of expenses between capital and revenue. वो क्या है कि ये assumption क्या है कि डिटरमाइन करती है कि when we are using the that time period, ठीक है। तो ये क्या है कि if we are using the 1 year time period, on the basis of this only we make the differentiation between the expenses that it is related to capital or revenue. If the expenses which are made with and they are made for the benefit for the long time, for taking the benefit for the long time, they will be kept under the category of capital expenditure. And if the benefit of the expenses is derived within 1 year only, that will be kept under the category of revenue nature. Okay, so accounting period is helpful in allocation of expenses as per capital or revenue nature. Portion of capital expenditure that is consumed during the current year is charged to income statement, and rest of the portion unconsumed is shown as an asset in the balance sheet. अब देखो ये क्या कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द बेसिक अकाउंटिंग टर्म ऑल्सो दैट इट गिव्स द बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसमें से देखो सपोज यू हैव मेड द 1 lakh एज ए you have made the expenses of 1 lakh as a capital expenditure, ठीक है। and you have made this for the that we can say to take the machinery or something that which will give you the benefit for the long time. तो जो पार्ट इस 1 lakh में से if you have consumed the rupees 10,000 only for this year, only the 10,000 will be charged from the P&L or we can say income statement, and the rest part will be shown in the asset side. Okay, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के अंदर शो कर दिया जाएगा। मतलब क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या है ईयर बाय ईयर क्या है मतलब राइट ऑफ किया जाएगा, एकदम से उस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। एज पर इनकम टैक्स लॉ, टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस फ्रॉम 1st April to 31st March. ओके, टाइमली एक्शन फॉर करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। अब देखो कि अगर अकाउंट्स ही ना प्रिपेयर और बिल्कुल एट लास्ट इफ देयर इज ए कंडीशन दैट द बिजनेस इज फेसिंग टू मच लॉसेस, ठीक है। So in that case there will be no management because the businessman has not prepared any account. And if the businessman is preparing the account year by year, so he can take the corrective actions if there is any mismanagement, we can say if there is any type of loss faced by the business, then the businessman can check the reason that why the business has faced the losses from the accounting records. Okay, वो क्या है accounting records को check करेगा, then he will compare that what are the range of profits, okay, what are the percentage of profit, if there is any deviation then he will find out the reason for the deviation and he will take the corrective actions. Next is full disclosure principle. According to this principle, apart from legal requirement, all significant and the material information relating to economic affairs of the entity should be completely disclosed in its financial statement and accompanying notes to accounts. अब देखो ये क्या कह रहा है कि full disclosure principle की सब कुछ all the information which is significant and material information, ठीक है, जो important information है that should be disclosed, that should be completely disclosed, ठीक है, उसको completely disclose करना है in its financial statement. Okay,
The financial statement should act as a means of conveying and not concealing the information. मतलब वो सिर्फ एक means of convey करने का एक mean होना चाहिए, ऐसे नहीं कि that it is concealing the information. Okay. Disclosure of information will result in better understanding and the parties may be able to take sound decisions on the basis of the information provided. But it says that if we are making the full disclosure of the important information, then the users of the accounting information, I have told you in the chapter first that there are two types of users, internal users and the external users of the accounting information. Internal users, in that we kept the owner and the management part, and in the external users there is that the users can be related to customers, government, that public, investors, researchers. ठीक है, they are the users of the accounting information, and if there is full disclosure of the accounting information, then they will be able to take the sound decisions on the basis of the financial information provided. Because if our financial position is good, then they will make more investment in the business, because they will be sure that they will get the money in return. Okay, they will get their principal amount in return, because if the business is in sound position, if in profits, then only the investors will invest the money in the business. So we can say that there was one more word used, that it should be fully disclosed and there should be notes to account. See, there was one word used that there should be notes to account. What are these notes to account? That there should be footnotes given, such as contingent liabilities in respect to a claim of a very big amount against the business are pending in a court of law. मतलब contingent liabilities हैं कि कोई बिजनेस के अंदर आपकी कोई भी मतलब डिस्प्यूट वाली कोई property have, there is a case in the court and the decision is pending, so there should be a footnote regarding that there is a contingent liability and what is the reason for that should be shown in the footnote. Okay, change in the method of providing depreciation. If the method of the depreciation is changed, earlier if the business was using the straight line method and the businessman has changed the method of depreciation and he has adopted a written down value method, then there should be a footnote that the method of the depreciation has been changed. Okay, market value of the investment. We know that we are writing the value of assets in the book value. Okay, हम क्या है book value के अंदर show out करते हैं in the balance sheet. So there should be a footnote regarding the market value of the investment. Okay, उसका footnote दिया जाना चाहिए. Next is materiality concept or principle. We can say that disclosure of all material fact is compulsory, but it does not imply that even those figures which are irrelevant are to be included in financial statement. According to this principle, only those items of the information should be disclosed that have material fact, मतलब जो क्या है important है, relevant है. In items having an insignificant effect on being irrelevant to user need not to be disclosed separately. These may be merged with other items. So वो क्या कह रहा है, materiality concept shows that the important information which is the relevant information should be fully disclosed. Irrelevant informations which are not important or we can say that which are not useful, that should not be disclosed separately. Okay, these should be merged with any other information. So if the knowledge of any information may affect the user's decision, it is known as or termed as material information. वो क्या कह रहे हैं कि material information क्या है? We are using the material word from the from the last two principles. Okay, this is the material related to the knowledge of any information may affect the user. मतलब एक ऐसी information, मतलब इतनी यहाँ पे जो मटीरियल है दैट इज़ यूज्ड फॉर द इम्पोर्टेंट वर्ड वी कैन से, मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इफेक्टिव,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, विच मेक्स द डिसीजंस, मतलब जो क्या है इतनी इफेक्टिव है विच कैन मेक द चेंजेस इन द यूजर्स डिसीजन, दैट इज नोन एज मटीरियल इंफॉर्मेशन. इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटीरियल फॉर वन एंटरप्राइज मे नॉट बी मटीरियल फॉर अनदर. अब एक बात हमेशा देखना, दैट द इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर वन एंटरप्राइज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द अनदर फॉर्म ऑल्सो. ओके, ये क्या है, हर एक फॉर्म की मटीरियल इंफॉर्मेशन अलग होगी. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एन एग्जाम्पल आइटम ऑफ एक्सपेंसिस ₹50,000 इज़ इमटेरियल फॉर एंटरप्राइज हैविंग टर्न ओवर फॉर ₹100 करोड़. अब देखो कि सपोज़ करो कि 50,000 का कोई भी मतलब एक टर्न ओवर है, मतलब एक एक्सपेंसिस थे 50,000 के, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द फर्म विच इज़ हैविंग द टर्न ओवर ऑफ 100 करोड़. इन दिस केस इट कैन बी इमटेरियल फॉर द for the enterprise which is having that the turnover of ₹100 crore. मतलब ये क्या है, ये 50,000 किसके लिए इमटेरियल हो सकती हैं, जिनकी टर्नओवर क्या है 100 करोड़ है. बट इट इज़ नॉट इमटेरियल फॉर द दैट एंटरप्राइज विच इज़ हैविंग वी कैन से इन द लैक्स टर्नओवर. ठीक है, अगर किसी की टर्नओवर ही 1 लाख है, ठीक है, और उसमें से वो 50,000 की अगर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस को भूल जाता है, दैट इन दैट केस इट इज़ नॉट इमटेरियल. अब वही बात कर रहे हैं कि दैट द आइटम विच इज़ मटेरियल फॉर द वन एंटरप्राइज में नॉट बी मटेरियल फॉर द अनदर. और ऐसे ही सेम तरीके से कि एक ऐसे आइटम विच इज़ इमटेरियल फॉर द वन एंटरप्राइज में नॉट बी इमटेरियल फॉर द अनदर एंटरप्राइज. मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एक के लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इंफॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द अनदर. ठीक है, 100 करोड़ वालों को 50,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट द इंडस्ट्रीज, द एंटरप्राइजेज विच आर वर्किंग एट द स्मॉल लेवल, दे आर हैविंग ए ग्रेट वैल्यू ऑफ 50,000. उनके लिए 50,000 इज़ ए ग्रेट अमाउंट. ओके, next is prudence principle. According to this principle, profit in anticipation should not be recorded, but loss in anticipation should be immediately be recorded. The objective of this principle is not to be overstate the profit of the enterprise in any case. When different equally acceptable alternatives methods are available, the method which having लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शुड बी अडोप्टेड. देखो क्या कह रहे हैं कि अगर एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब आप ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं बिजनेसमैन कि ये प्रॉफिट्स हो सकते हैं, दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, बट द प्रॉफिट्स बट द लॉसेज विच आर एंटिसिपेटेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हैं और हो सकते हैं, दैट कैन अकर इन द फ्यूचर शुड बी रिकॉर्डेड. ठीक है, लॉसेज को रिकॉर्ड करना चाहिए कि मतलब ये हो सकते हैं, मतलब बिजनेसमैन इज एक्सपेक्टिंग दैट इट मे अराइज. ठीक है, देयर कैन बी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड द प्रॉफिट्स विच आर एंटिसिपेटेड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. ठीक है, so that why it is done because that if there is any variation or any change in the that market condition and the businessman may face less profit. ठीक है, less profit due to the and at if the businessman is recording all the profits which are anticipated, मतलब profits in anticipation के अंदर मतलब क्या है कि उसको लग रहा है कि ये profits होंगे and he is recording all the profits, in that case he will be he may go to the position of losses also. Okay, so the unexpected profits, we can say that if the businessman is expecting the profit in future, it should not be recorded, but if there is a chance of losses or expenses, that should be recorded. Okay, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और रिलायबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर. ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज़ मेड. अब देखो क्या किया जाता है, स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट और रिलायबल वैल्यू से जो भी कम होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, सो डैट वी कैन गो इन सच ए पोजिशन इफ़ देर इज़ ए चेंज इन द वैल्यू द बिजनेसमैन शुड फेस द लेस लॉसेज. ठीक है, उसको कम लॉसेज को फेस आउट करना पड़े. इसी वजह से क्या है, पहले ही एक प्रोसीजर बना लिया जाता है, सो डैट द बिजनेसमैन मे फेस लेस लॉसेज इन द फ्यूचर. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बनाया जाता है. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मीन्स इफ़ देर इज़ ए चांस
that debtor will not give the amount in future. मतलब debtor क्या होता है, the person who will pay the amount to the business, and if there is a chance that the debtor will not pay the amount in the future, then the businessman should prepare the provision for doubtful debt, so that if there is bad debts, मतलब अगर debtors ने पैसा नहीं दिया है, so that the losses can be recovered from the provision. ठीक है, इसी तरीके से if the businessman is having the policy of giving discount, then there should be a provision made for the discount on debtors, so that he should face the less losses in future. Okay, next is cost principle. According to this principle, an asset is recorded in the books of account at its original cost, comprising cost of acquisition and all expenses incurred for making the assets ready to use. मतलब क्या कह रहा है कि ये कि जो भी asset होती है बिजनेस की, it is recorded in the books of account at its original cost. अब original cost के अंदर क्या प्लस कर दिया जाता है, that installation expenses. ठीक है, अगर if there is any installation expenses and another cost of acquisition, all these expenses are added to the original cost and the final cost is shown in the balance sheet. ठीक है, बुक assets को किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, at the cost value on the original cost. In this, all the expenses related to acquisition and the expenses which are made for making the assets ready to use, all the expenses are added to the original cost. This cost becomes the basis of all subsequent accounting transaction for the asset. Since the acquisition cost relates to the past, it is referred टू एज हिस्टोरिकल कोस्ट. ठीक है, तो ये क्या है, इसको हिस्टोरिकल कोस्ट भी माना जाता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट. Suppose there is a example is there, one machinery purchased for rupees 1,50,000 in cash and 20,000 was spent on its installation of machine. Then rupees 1,70,000 will be recorded as a cost of machine. अब देखो वही था कि 1,50,000 की उसकी cost थी मशीनरी की and the plus 20,000 was spent on the installation. मतलब उसको यूज़ करने के लिए, रेडी करने के लिए there was a expenses of 20,000. Then the cost of rupees 1,70,000 will be recorded in the books of account and depreciation will be charged on this cost only. मतलब 1,70,000 पे ही क्या किया जाएगा, depreciation will be charged. If the market value of the machine due to inflation मतलब महंगाई की वजह से क्या है, has gone up to rupees 2 lakh. अगर मार्केट वैल्यू क्या है 2 लाख हो चुकी है and the original cost is 1,70,000, then the increased value will not be recorded. Okay, increased value will not be shown in the books of account. This cost is systematically reduced year after year by charging depreciation. अब क्या है कि आपको पता है व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूज़. ठीक है, ड्यू टू टियर एंड वियर, मतलब जैसे जैसे आप असेट को यूज़ करोगे उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी. वी नो डैट वी आर शोइंग द वैल्यू ऑफ असेट इन द बैलेंस शीट एट इट्स ओरिजिनल कोस्ट. सो टू मेक द मेंटेनेंस of this value, the depreciation is charged year by year. Depreciation is the value which is calculated, which we can say that it is the value means reduction in value of asset. ठीक है, depreciation is the reduction in the value of assets by use or tear or wear. मतलब जैसे जैसे आप एक asset को यूज़ करोगे उसके ऊपर depreciation, उसकी वैल्यू कम होती है and that decreased value is known as depreciation and the depreciation is charged year by year. Okay, the assets are shown in the balance sheet at book value. ठीक है, cost minus depreciation. book value क्या हो जाएगी उसकी, cost minus depreciation. Next is matching principle. According to this principle, all expenses incurred by any enterprise during an accounting period are matched with the revenue recognized during the same period. Okay.
So what this principle says, the matching principle facilitates to ascertain the amount of profit and loss incurred in a particular period by deducting the related expenses from the revenue recognized that period. ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि डेट ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं आर मैच्ड विद द रेवेन्यू, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं एंड द रेवेन्यूज आर मैच्ड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड द रेवेन्यूज आर मैच्ड विद ईच अदर. ओके, so the following treatment of expenses and revenue are done due to matching principle. कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं? ascertainment of prepaid expenses. Prepaid expenses means the expenses which are not incurred till now but we have paid that in advance. ठीक है, हमने क्या है प्रीपेड मतलब एडवांस में ही पेमेंट कर दी है. ascertainment of income received in, अब क्या है ये तो आपने पे किया था. if there is any income which is received in advance we will ascertain that amount. accounting of closing स्टॉक, मतलब वैल्यू क्या है क्लोजिंग स्टॉक की, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है ऑन फिक्स एसेट्स. ठीक है, दीज ऑल आर द ट्रीटमेंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल. ठीक है, इसके अंदर असरटेनमेंट की जाती है कि हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, विच इज़ द इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज़ चार्ज्ड ऑन फिक्स एसेट्स. ओके, next is dual aspect principle. It means that every transaction will make the double effect. Okay, one that is debit and second is credit. Okay, so according to this principle every business transaction has two aspects, debit and credit. I have told you that debit and क्रेडिट. ओके, ऑफ इक्वल अमाउंट, मतलब जितने से आप डेबिट कर रहे हो उतनी ही अमाउंट से कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा. इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स और वाइस वर्सा. ये क्या कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम, इट इज़ रिलेटेड टू डबल एंट्री सिस्टम मीन इफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन is done that it will have the double effect. One thing will be debited and the second will be credited. Okay, so due to this principle the two sides of balance sheet are always equal. ठीक है, इसी प्रिंसिपल की वजह से जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इक्वल रखा जाता है. वो इसी प्रिंसिपल की वजह से होता है. असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. द बैलेंस शीट इज हैविंग इक्वल्स द both the sides of balance sheet are always equal. Okay, assets equal to liabilities plus capital. So there is an example. Ram started business with cash rupees 1 lakh. We know that it will be considered as capital because it is related to initial investment by the Ram. Okay, it increases cash in asset side and capital in liability side. We know that it will be considered as capital and it will be shown as cash also in the asset side. So see what will be the double effect of this. Ram started business with cash. तो क्या होगा इसकी एंट्री अगर हम करेंगे तो क्या होगा that it will increase the cash account will be debited to capital अकाउंट. ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी. तो देखो एक चीज़ तो डेबिट हो रही है एंड वन सेकेंड अनदर इज credited. Okay, so assets 1 lakh and liabilities plus capital equal to 1 lakh. So we can take one more example related to this. Suppose purchase goods or we can say sale goods or purchase goods for rupees 10,000. ठीक है, आपने गुड्स परचेज की हैं for the 10,000. what we are showing here that purchase is debited टू कैश. आपने कैश, अब देखो क्या हो रहा है इफ़ परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. देखो डबल एंट्री हो रही है ना कि आपने एक ट्रांजेक्शन की डेट द परचेजेस राम परचेजेस द गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000. उसने परचेज किया है गुड्स का एंड देयर इज ए सिंगल ट्रांजेक्शन बट दैट ट्रांजेक्शन विल मेक द अफेक्ट
फॉर टू साइड्स, ओके। परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक चीज़ को आप डेबिट कर रहे हो तो उसके बदले में अगर आपके पास मतलब वो गुड्स आ रही हैं तो उसके बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। आपने गुड्स परचेज की, सपोज यू गो टू ए शॉप एंड यू परचेज ए पेन, यू परचेज ए पेन, आपने एक पेन खरीदा, उसके बदले में यू पेड द मनी, ठीक है। आपने एक पेन खरीदा, ओके, उसके बदले में आपने क्या दिया, मनी दिया, ठीक है, रुपीज़ पे किए। तो देखो आपके पास क्या आया, पेन आया, बट इन रिटर्न व्हाट यू गिव, रुपीज़, मनी, ओके। पेन डेबिट, इफ़ यू से दैट पेन डेबिट टू कैश, ठीक है। तो आपके पास देखो ट्रांजैक्शन डबल हुई ना, डबल इफेक्ट हुआ कि एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, क्रेडिट। सो व्हाट इट सेज दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग द double effect, okay. So students, today we have completed accounting principles. Revise this topic from the book also. If you face any problem, you are free to ask. Stay home, stay safe. Thank you.